So, industrial development eradicates unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industry and joint sector venture in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. Then export of manufactured goods, export of manufactured goods expands trade, commerce, and brings in much needed for foreign exchange. Then countries that transform their raw materials into a wide variety of finished products of high value are prosperous. क्या होते हैं वो prosperous होते हैं. ये बहुत बहुत important है, बहुत बहुत. So India's prosperity lies in increasing and diversifying in manufacturing industry as quickly as possible. Then आप क्या बोला कि ideas of national unity in early 19th century was Europe was closely allied with the ideas of ideology of liberalism. इसमें कुछ नहीं करना, लिबरलिज्म का डेफिनेशन लिख दो, जो डिफरेंट मीनिंग्स है उसको लिख दो बस. देखो कितनी बार रिपीट हुए सैम्पल पेपर में, सीबीएसई कंपार्ट में. तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. देखो ये ना, ये मिडिल क्लास के बारे में बोला गया. फिर politically it emphasized on the concept of government by consent. Then derived from liber means free, stood for freedom of all and equality before law. Then politically government by consent, universal adults suffrage and right to vote for all. Then in French Revolution it stood for the end of autocracy and clerical powers, a constitution and a representative government through parliament. Next, अब थ्री इकोनॉमिक हार्डशिप. देखो इकोनॉमिक हार्डशिप जब भी आए ना तो ये सारे पॉइंट्स लिखो, ये हैक्स है. तो पॉपुलेशन आपका इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए खाना जो है वो नहीं आ पाएगा. पॉपुलेशन इंक्रीज होने से और क्या आ सकता है, आपका जो सिटीज है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा. ओवर क्राउडेड सिटीज, आपके पास इनकम बिल्कुल नहीं है. तो enormous increase in population, enormous increase in population, increase in population was seen all over the Europe. In most countries there were more seekers, yes ये point देखो, more seekers of job than employment. Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums. फिर क्या लिखेंगे, small producers in towns were often faced stiff competition. कौन सा competition, stiff competition मतलब बहुत तगड़ी competition थी. From imports of cheap machine made goods from England. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले मेरा इंग्लैंड में हुआ था 18th century में. Next, in Europe the aristocracy still enjoyed power and peasants struggled under burden of federal dues and obligations. फिर rise in food prices as a result of bad harvest which led to widespread pauperism in town and country. देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, इनको शॉर्ट में कैसे लिखें. तो लेट्स राइट विद मी. ओपन योर बुक, हिस्ट्री बुक. ओके.
तो where years of great economic hardship. First point क्या लिखेंगे? Increase in the first half century, increase in population in first half 19th century. Second क्या लिखेंगे? और ओवरी रोग ठीक. अब क्या लिखेंगे? In most countries there was more seekers of job. Second point लिखो, more seekers of job than employment. Next क्या है? Population from rural area migrated to cities to live in overcrowded slum. Population from area migrated to cities to live overcrowded slum. Next, small producers faces com- faced stiff competition from imports of cheap machine goods. Small producers from from small producers in towns कौन बंद कर रही हेडफोन दिए faced stiff competition from imports of England from MACHI machine goods of England. England. Then, or this was specially so in textile production, which carried aristocracy enjoyed power, but peasants struggled under burden of federal dues. Aristocracy enjoyed power, but कंसंट्रेट करेगी पर तो लास्ट गेट बंद कर ले काम लगा नहीं जहाँ पड़े चलने पड़े पते नहीं चल तो समय कब निकल गए power but peasants struggled under burden of federal dues. We rise in food price due to bad harvest. Due to bad harvest led to देखो पॉपरिज्म का मतलब होता है पोवर्टी
लेड टू पॉपरिज्म। हो गया। अब देखो, इसी के कारण से आपका जो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, बाद में 1848 में जो आपका लुई फिलिप भाग जाता है और जो सिलीसिया में रिवोल्ट होता है, इसी सब का रिजल्ट था। एक तरह से फ्रस्ट्रेशन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2015 और 17। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ग्रीन कलर करते हैं, बहुत किया। एक बार रेड करके देखते हैं। टू मेन सत्याग्रह मूवमेंट against, oh sorry, organized by Mahatma Gandhi successfully in favor of peasant in 1916। क्या भाई, क्या लिखा है, कितना गलत लिखा है। 1917 में टू सत्याग्रह हुए थे, इतना गलत। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1970 में दो सत्याग्रह हुए थे, एक बिहार चंपारण में और एक दूसरा गुजरात के खेड़ा में। तो बिहार चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, तो इंस्पायर पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। एंड जो गुजरात खेड़ा में हुआ था, to support the peasants due to crop failure and plague epidemic that they could not pay any revenue and they want to repeal the revenue correction। okay, तो दो दो सत्याग्रह, एक चंपारण में, एक खेड़ा में, इसी को डिस्क्राइब करना है बस। तो चंपारण में देखो, सत्याग्रह मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंट मेथड। इसको बोलेंगे मास एजिटेशन। मास एजिटेशन था, और इसमें क्या होता था, ये विदाउट वायलेंस, विदाउट वायलेंस। आइडिया ऑफ सत्याग्रह में साइन द पावर। चंपारण में देखो क्या हुआ, चंपारण में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो चंपारण में गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह टू इंस्पायर पीजेंट टू स्ट्रगल, एक मिनट, टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। खेड़ा में क्या, ओ सॉरी, खेड़ा में क्या होता है, he launched Kheta Satyagraha to support peasants who were not in position to pay revenue due to crop failure। next, बोलता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। 1000 बार ये रिपीट हो जाएगा, दिखा रहे इतना, बहुत सारे सेट में रिपीट हुआ है। इसको लिखो, 2023 में भी है। चलो लिखते हैं इसको। तो huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes, custom duties were raised। और तभी आता है आपका introduction of income tax। हाँ, income tax was introduced। next, through the war years prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for common people। sorry, villagers were called upon to supply soldiers, जिसको बोलते थे forced recruitment। हाँ, ये लिखा भी, forced recruitment in rural areas and caused widespread anger। next, देखो ये सारे के कारण, देखो इसको कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे, क्यों कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ये सारे रीजंस के वजह से एंटी कॉलोनियल फीलिंग आती है। एंटी कॉलोनियल फीलिंग directly linked with nationalism। nationalism। next, three examples, आपको three examples to show that world changed with widespread discovery of new sea routes to America। देखो इतनी बार आ चुका है, 3 बार, लेकिन देखना होगा। एक आंसर पढ़ के बताती हूँ कैसा है ये क्वेश्चन। हाँ, तो before the discovery of sea routes, America had been cut off from the regular contact with the rest of the world for millions of years। But from the 16th century, its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere।
where then precious metals. uh, Precious metals, particularly silver, from Midas, located in present day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with एशिया. देखो ये लोग सर्च करने गए थे इंडिया लेकिन इनको मिलता है अमेरिका. तो विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट three types of movement or flows can become prominent. Flow of goods, labor and capital. देखो ये शायद अपन लोग को पढ़ना है, हाँ पढ़ना है. Question is important but I am too confused to answer to that this question is important or not, as it has been asked in 3 years. But okay, take screenshot. Okay, take screenshot. It is better to take screenshot. I will work on this question and will upload a video regarding this. ठीक है, एक बार हिस्ट्री का बुक निकाल के देखते हैं ना इसका आंसर. चलो तो देखो 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 देखो. देखो अमेरिका के इनहेबिटेंट्स को बोलते थे अमेरिकन इंडियंस, ये भी याद रखने वाली बात है. देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ ये क्वेश्चन है ना. प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in 16th century after Europeans found a sea route to Asia and successfully crossed the Western Ocean to America. First point देखो, America had been cut off supply from the rest of the world for millions of years. वो छोड़ दो. From the 16th century, second point, its vast land and abundant crops minerals began to transform trade and lives everywhere. Third point, ये वाला point बहुत important. Precious metals, example, precious metals like silver from mines located in present day Peru and Mexico enhanced Europeans' wealth. फिर क्या लिखना है हमको? Legends spread in 17th century Europe about South America's fable wealth. ये भी लिख लो. एल्डोराडो दो फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, यहाँ तक लिखते हैं. एग्जाम्पल्स ओके. वर्ल्ड with discovery of new फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि अमेरिका had been cut off from regular contact with rest of world at vast lands and abundant crops transformed trade. ट्रेड तक की ठीक है.
एक लो precious metals like silver from mines of Peru, Mexico, enhanced Europe's wealth and financial freedom. एजेंट्स के बारे में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इतना हो गया। The economist of 19th century identified three types of momentary flows with international economic changes. क्या है ये? अच्छा, वन पॉइंट थ्री तक। हाँ, ये नहीं आ रहा साथ। Mentioning five restrictions for British comment upon spirit which organ could not function. ये नहीं पढ़ना। दीदी दीदी हमरा पूछिए वो अति अचल को छोड़ कर सकते अचला अचला नहीं और ब्लाउ अंचला नहीं, अचली कोई ना चला लो कुछ गिरिधर गिरिधर गिरी गिरी मतलब अति पहाड़ हम गिरिधर पूछ रहलियो। ओ गिरिधर अच्छा दीदी ओकरा छै कि गाना ना सॉरी जाना ना तो एक काम करता अथी कर दे छु ई एकरा चार्ज लगाओ तो एक मिनट दीदी गजा गजा इधर 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 गजानन कौन गजानन के गजानन गजानन केकरा ऊपर क्या करवा रहे हैं आप हाँ ओकरा पढ़े में नहीं मिला दीदी गजानन सॉरी गजानन गजानन गणेश जी को नहीं योग रोड में थे ना हाँ गज है जिसका आनंद नरेश सो रहा है कि अकर्मक की सकर्मक क्या कर रहा है तो सो रहा है अकर्मक लिखा मत बहुत चाहे सकर्मक एक ही सिंह से बड़ा टिक अकर्मक होते was a job was a job or employer how did they know things like this यहाँ छ नरेश सो रहा है अकर्मक हम की कर दिया कर्मक क्योंकि सो रहा है जहाँ पर क्रिया है जो क्या भी वो अकर्मक हो जाए हाँ ये देखो ये इम्पोर्टेंट है तो
Textbook for civil services examination were printed in vast numbers and uncontrolled one. बताइए क्या है? Merchants use the print and the new readership preferred fictional narratives, poetry, and romantic plays. Rich women begin to read. Many women begin to publishing their poetry and plays. Imperial State in China, a major producer of printed material. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? टेक्स्ट बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम merchants used print every day as the corrected use of print by merchant उधार नहीं છે ચાલે ઉધાર use of print by merchant for trade information. Third क्या लिखेंगे? New readership preferred fictional. Readership preferred फिर rich women begin to read and publishing poetry and plays. Women okay. Okay, next. Progress of print in Japan. कितनी बार रिपीट हुआ? 10, 11, 12, 17. देख रहे हो प्रिंट? ये भी लिखना होगा. अभी फोन चार्ज लैपटॉप चार्ज और डिस्चार्ज होना चाहिए. Progress of Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan. So, introducing hand printing technology in Japan from China by Buddhist missionary. हाँ नीचे गेले कब किया था? फिर हो क्या है? मिटाएगा जापान पोर्ट्स इन प्रोज. फिर है
Oldest Japanese book printed in 1868. Book printed in 1868 is Buddhist Diamond Sutra. Pictures are printed on textile, playing cards, and paper. So, in medieval Japan, poets, prose writers were regularly published books were cheap and abundant. Hmm, Regularly published, and books were cheap and abundant. Cheap and abundant books. फिर क्या है? Printing of visual material led to interesting public practices. ये देखो ये point. Printing of visual materials led to interesting public practices. ये थोड़ा point नहीं हो रहा है ना. Printing of visual materials. Printing of visual materials. एक मिनट. विजुअल मटेरियल का प्रिंटिंग देखो ये यहाँ से लिखते हैं हम लोग. In late 18th century, urban circles flourished at Edo. क्या अच्छा रहेगा ना? In late 18th century, urban circle at Edo flourished. Depicted ancient urban culture और tea house gathering 2 points. In 18th century, urban चार्ज लगाओ. Urban circles at Edo. Edo मतलब टोक्यो. Flourished depicting elegant urban culture or and नेक्स्ट देखते हैं. हाँ एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. ये 100 बार पढ़ चुके हैं, पर इसको रिसीव कर लेते हैं. तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री. इज वेरी कंट्री टोटल पॉपुलेशन क्या है? 59%. हरियाणा से हाफ पॉपुलेशन है इसका. 1 crore. 59% lives in Flemish region, speaks Dutch language. Another 40% lives in Wallonia region. देखो Flemish, deaf, deaf, deaf. हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था deaf में, याद है? deaf, DAF. डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और यहाँ पे deaf.
या फिर बैंक में एफडी होता है ना, वो ले लो। डेफ मतलब सॉरी, डच वाले लोग ये क्या बोलते हैं, डच वाले लोग फ्लेमिश में रहते थे, और 40% पीपल जो थे वो बोलोनिया में रहते थे, जो फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% बेल्जियन स्पीक जर्मन बोलते थे इन कैपिटल ऑफ ब्रसल्स। यहाँ पे उल्टा केस हो जाते, 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच। देखो कुछ ऐसा था। मान लो ये बेल्जियम है, ये कैपिटल सिटी ब्रसल्स, तो आई एम फ्रेंच को ऐसा हाल था। ठीक है। ये ये था, ठीक, ये था आपका बोलोनिया। इसमें से कवर कर देती हूँ, ठीक है। और बाकी ये जो भी पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये आपका पूरा रीजन जो है, ये पूरा बेल्जियम, ये आपका फ्लेमिश, यहीं पे डोमिनेंट था वो लोग, बस ऐसा केस था वहाँ पे। इसको रिमूव करते हैं, इसको भी चलो बेकार है ये सब। नेक्स्ट, बेल्जियम शिफ्टेड अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू ओ united to federal form of government, which key changes were brought। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया। क्या किया गया, एक शॉर्ट में देखते हैं। ओह शिट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 टाइम्स। और अब देखो पढ़ते हैं। Many powers of the central government were given to स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनिटरी से फेडरलिज्म का यही मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर नहीं। नेक्स्ट क्या बोला, रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन, हाँ, regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on central government। ठीक है। अब क्या बोला, apart from central government, state government, there is a third kind of government known as community government, most important। रख लो इसको बच्चे, बहुत important है। इसको नहीं याद करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझा, याद करना ही पड़ेगा। ओश, what I am doing, okay, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको पहले, इसको रुको, क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। एज पावर रिगार्डिंग कल्चर, ये बहुत बार आता है कि कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ वर्क करती है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया थर्ड टायर में, एजुकेशन और लैंग्वेज पे काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, फोटो से ब्लैक पावर मूवमेंट नहीं है ये, चलो नेक्स्ट, इसको ऐसे नेक्स्ट, नेक्स्ट, women representation Indian legislative body। Oh, it's never reached 10% of total strength. The share of women in the state assembly is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world
It is behind the average of several developing countries of Africa and Latin. India is behind the average developing countries of Africa and Latin. वो ज़्यादा डेवलप करने से बहुत पीछे है, ठीक है. Government cabinets are largely all male. When a woman becomes chief minister, women representation in the legislature increase women representation में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लेकिन जो बुक के हिसाब से वो नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका ले तुम लोग भी ठीक है ओनली स्क्रीनशॉट पेज नंबर नहीं याद रहता ना Oh, importance of political parties. देखो जब भी इम्पोर्टेंस और फंक्शन लिखने के लिए आए तो ये लिखो और जब भी नीड लिखने के लिए तो वो लिखो कि पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या है तो उसमें से लिखो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते तो क्या होता इसी से जो भी पॉइंट्स फ्रेम करोगे उसको सीक्वेंस में लिखते जाओ लास्ट में ये कंक्लूड करो कोई भी ऐसे कोई भी सोसाइटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई उसको गाइड करने वाला हो उसके व्यूज़ को प्रेजेंट करने वाला हो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है ओके तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल all those conditions that are necessary for development of society. इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ एक बार कंटेस्ट इलेक्शन to form government parties put forward policies and programs and the voters choose from them a party reduces a vast multitude of opinion हाँ ये बहुत important few basic positions which it supports party plays a decisive role in making laws for a country parties recruit leaders train them and then make them ministers to run the government then parties provide people access to government machinery and welfare scheme implement देखो इम्पोर्टेंस parties contest ये opinion put forward policies and programs that voters choose from them हाँ ये important put forward policies and program and voters choose from them. फिर party reduces vast multitudes of opinion. Parties vast multitudes opinion into a few basic positions.
Parties में discipline फिर क्या है, parties recruit leaders, train them and make them ministers to run the government. ये point भी important है. Parties recruit leaders, train them and make them ministers to run government. Next, parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government. Okay, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सारे पॉइंट्स तुम खुद से लिख सकते हो, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने 1 मिनट फिर से एक बार टिक कर देती हूँ. ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो, ये पॉइंट, ये सब कुछ जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं उनमें से ये पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लिखो मेरे साथ. पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस, क्या लिखोगे, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी. और एक और बात इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी पीपल जो होते हैं दे फील फ्री टू कंसल्ट पॉलिटिकल लीडर्स rather than to consult government civil servants. Okay, machinery and welfare scheme implemented by government. एक, हाँ हाँ
Let's come back. So question is, on the basis of what values and of expectations and democracy should produce a harmonious and social life? Explain. Equality among all human beings, respect for individual, democracy, accommodate social division, reduce possibility becoming explosive or violent, ability to handle differences, divisions, and conflicts. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. Democracy produces a harmonious and social life. Explain. Democracy provides harmonious life. ये कैसे करेंगे देखो आप देखते हैं. Equality for human being, respect for भैया respect for individual freedom, respect for individual freedom, Torah lockcho kore. Democracies accommodate various social division, accommodate various social division. Democracy reduces possibility of tension, reduces possibility of tension becoming explosive or violent, reduces possibility of tension becoming violent. Next, ability to handle social differences, divisions, and conflict. Ability to handle social difference. Next, next challenges of deepening democracy is being faced by every democracy in one form of another. Suppose a statement. Challenge of deepening of democracy is being faced by democracy in one form of another. The, strengthening the institution practice of democracy. The ordinary people have different expectations of democracy from societies. Therefore, the challenges are different meanings in different parts of it. It wants more of the people participation and control. It controls and wants to bring down the control of rich and powerful people in making of the governmental decision. Next. What is development? Mention any two features of development. देखो कब आएगी 11 में भी है. So what is development? Development is a comprehensive term which includes increase in real per capita income, improving living standard of people, reduction in poverty, illiteracy rate. और हम दूसरा डिफाइन कर सकते हैं इसका डेवलपमेंट का
Just a minute. Process of creating growth brings progress and having positive change is called development. Process of process of creating growth brings progress. Brings brings तो मैंने यहाँ लिखते हैं प्रोसेस ऑफ इसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंट तो different persons have different क्या income is a major component. National income is defined as the total value of all. What is the total national income divided by the feature? Feature अच्छा इसमें आ जाएगा कोई बात नहीं. To consider discourage employment can have also we call underemployment. It is a situation more workers are working in a activity than required. Activity situation in which more workers are working in an activity than required. People who are actually engaged in such activities appear to be employed but not fully employed. For example, ये unemployment is basically found in agriculture. Unemployment can also be called underemployment because workers perform below their productivity level. देखो example में क्या if for a cultivation of 1 hectare land 10 workers are required but instead of 10 15 workers are working in case 5 workers are disguised unemployed. In such cases even if the surplus workers production will not be affected. Next, known activities of bank in India. लोन एक्टिविटीज के बारे में लोन एक्टिविटीज लोन एक्टिविटीज देखो ये क्वेश्चन से दिमाग रिपीट हुए 17-18 इम्पोर्टेंट है सॉरी बैंक्स use major portion banks major portion of deposits to extend loans make use of deposits to meet loan requirement use of
deposits to make no requirement of people, then mediate between those having surplus funds and those who are in need and those who are in need. फिर rate of interest on loans and what it offers. And deposits. Next, what is GDP? Who is responsible for lifting GDP in India? GDP is the value of goods and services produced within a country during a given time period. In India, Mamo Math, task of GDP is undertaken by the Government Ministry. This ministry, with the help of various government departments, India states and union territories, collects information related to the volume of goods and services and their prices, and then estimate describe the factor that multinational could set up their production unit in particular place. Okay. Proximity to markets, availability of skill and proximity to market. Availability of skill and unskilled availability of other factor production is assured. Government policy that took after their interest liberal क्या बोल सकते हैं इसको लिबरल ट्रेड पॉलिसीज या फॉरेन पॉलिसीज मिनट वो तो मैंने लिखा होगा हाँ लिखा तो है तो
हाँ, लिबरल लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ, मनुष्य भगवान बनाया सबसे अनोखा और विचित्र प्राणी है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आता है तब से कई तरह के कर्म करता है। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे जीवन काल में हर मनुष्य को अपने अपने अपना अपना कर्म करना चाहिए। यह कर्म यहाँ कर्म का अर्थात सिर्फ सुबह उठकर काम करना नहीं। इस कर्म का अर्थ अपना वो कार्य करना जिससे सबकी कल्याण हो, जिससे संसार में सब एक जिस प्रकार सेफ्टी एक विद्यार्थी मेजर्स। का कर्म है ध्यान से पढ़ना एवं लिखना, एक शिक्षक का पढ़ाना और माता पिता का इन दोनों पर ध्यान देना। अगर कोई भी इस कार्य में अर्थात अपने काम में चोरी करेगा तो शायद किसी एक का भविष्य खराब हो सकता है। जिस प्रकार पूजा किसी के दबाव में आकर नहीं अपने मन से करते हैं एवं पूरे लगन और शिद्दत से करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने काम लगन एवं शिद्दत से करनी चाहिए। कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं है। कौन टॉपिक पे लिख ली है? बढ़िया तो। बढ़िया है। निबंधन कर की पूजा। 11, 14, 16। नहीं फिर मैं सर खेले सर खेले रहते। तो समझे नहीं सर आ जाइएगा प्लीज। सर आ ही जाइए नंबर में 2-3 राउंड बना के चले जाइएगा। ट्राई कर रहे थे ये प्लॉट से per day forest plays a key role in ecological system as their primary producers. फिर second dependent on for many forest dependent countries directly depend on them for the forest provide timber food. How has agriculture alleviated the problem of water scarcity in India? Water is basic input. देखो कितनी बार repeat हुआ है बार. So water is basic input for in agriculture used for irrigation. That's why we seeds need a more water as compared to traditional seeds. Commercialization of agriculture leads to withdrawal of groundwater, overuse of groundwater. क्या है क्वेश्चन? Agriculture aggravated role of agriculture in water scarcity ये लिख सकते हैं. एग्रीकल्चर से वाटर स्कार्सिटी कैसे होता है? तो देखिए ना irrigation